Hello everyone, I'm Professor Ritesh Ranjan Jha. Welcome to you on my channel MacRights. Today I'm going to discuss with you about the braking system. It is very important topic from exam point of view, so let's get started. Design of a braking system. It is our topic name. So first of all, we have to know what is the brake. Brake is a device which is using the artificial frictional resistance to apply the moving machine members, and it is doing what? It is going to retard or stop the motion of the machine. The brake observes either kinetic energy, potential energy, or both. The energy absorbed by the brake is dissipated in the form of heat. The design on capacity of a brake depends upon the following factors. So let us see. First of all, unit pressure between the braking surface, and the braking surface is what? Tires and road. Coefficient of friction. Third one is peripheral velocity of brake drum, and it is applied only in drum brake condition. Projected area of a frictional surface. If the surface will be high, then the chances of braking will be more. Like if the tire size will be high, its width is more, then the connection between the road and tire will be higher, then the braking chances will be higher. Ability of brake to dissipate the heat, it is very important. And now the system or braking system is doing what? It is always kinetic energy को ये क्या करता है? It is going to break the kinetic energy. So what is the kinetic energy? Its a formula is half W by G U square minus V square, where U is what? Initial velocity, V is the final velocity, W is the weight of the vehicle, and G is the acceleration due to gravity. W by G is what? It is the mass. So finally we can say half mass U square minus V square. Now maximum usable coefficient is occurs between the tires and road surface. And in the passenger car, the mu is what? Its a frictional coefficient is about 0.35 to 0.5. Now the next topic is coming here, brake balancing. It is a very important topic. Brake balancing is what? Braking force acting on a ground level always. Vehicle weight and the kinetic energy acts through the CG, that is the center of gravity. Vehicle to pitch forward as the brake applied. Whenever we are applying the force, then it will go pitch forward, and whenever we are accelerating the vehicle, the weight of the vehicle is going back. Whenever we are going to apply the brake, weight of the vehicle is going to forward direction. Why it is happening here? Because whenever we are applying the force during the brake, so force is applied on the road or lower side of the CG, but the weight of the system is upper side of the CG mostly. So what is happening here? I'm giving you one simple example that suppose कि घोड़े पे हम दौड़ रहे हैं और घोड़ा अचानक रुक गया, तो people will go in the front direction due to what? Due to the inertia forces. So same thing happening in the system also. If ये अपनी पोजीशन है, ये CG है, ये नीचे यहाँ पे ब्रेक लगाया, अपर एक मास, जैसे ब्रेक लगाया ये अपर वाली पोजीशन आगे की ओर जाएगा, क्योंकि ये जो है रेडियस ऑफ ये जायरेशन लॉ को फॉलो करेगा और ये आगे की ओर झुकना चाहेगा. सेम थिंग अगर कोई व्हीकल सडन आगे की ओर बढ़ता है, तो ये जो वेट है वो किधर जाएगा? बैक साइड हो. तो जब कभी हम ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है? वेट ऑफ द व्हीकल ट्रांसफर रियर टू फ्रंट ड्यूरिंग द ब्रेकिंग ऑफ द vehicle. So final conclusion is what? The front brake must be absorb more kinetic energy than the rear brake, and the maximum transfer of the weight amount should be what? Wt equal to mu h by b and w, where mu is the coefficient of friction, h is the height, b is what? It is the
wheel base. Okay, Wt is weight transfer, mu is the frictional coefficient, h is the height of CG from the ground. Same thing during the deceleration of the vehicle, because whenever we are going to apply the brake, vehicle will going to decelerate. In that case, Wt will be mu h by b, or here we will multiply f by g, where f is what? It is the deceleration and g is acceleration due to gravity. Now, since we know that whenever we are applying the force, then in the front side weight is going to transfer. So definitely the weight should be added in the front wheel and subtracted from the rear wheel. And it is observed that almost when the system is static condition, in the static weight condition, about the 50% of vehicle weight is transferred in the front side and the rest 40% in the rear side. So during the design we have to design like what? Whenever we are going to design a brake, तो हमें क्या करना होगा कि 55% वेट जो फ्रंट साइड पे है उनके लिए हमें ब्रेक सिस्टम डिजाइन करना है, और रियर साइड कितना? ओनली 45%. तो हमें रियर साइड के ब्रेक को 45% लोड के अनुसार ही डिजाइन करना है. ओके, विद द full braking, it is desirable to have the front brake locked on slightly ahead of the rear brake. और इससे क्या होगा? जो कार है ना वो क्या होगा? स्ट्रेट जाएगा and it will not spin out. Now the next topic is stopping distance. So what is a stopping distance? Whenever we are going to apply the force, we are applying the brake, sudden brake applying, vehicle is not going to stop. So it will take few seconds, and during that second vehicle will travel some distance, that is stopping distance. And it is very important during the emergency braking. It is based on the deceleration rate. Okay, and it is affected, क्या affect करता है? First of all, tire deflection. Another, air resistance is very important. Sometime क्या होता है कि सामने से बहुत ज्यादा एयर्स आ रहा है, सो ड्रैग फोर्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो ब्रेकिंग अच्छी लगेगी. जब सेम टाइम अगर बैक साइड से एयर प्रेशर है और यू आर गोइंग टू अप्लाई द ब्रेक, तो जितनी डिस्टेंस उनको कवर करनी चाहिए थी व्हीकल को वो उनसे ज्यादा कवर करेगा. ब्रेकिंग एफर्ट इज आल्सो इम्पोर्टेंट. आपने कितनी जोर से ब्रेक लगाया है. योर रिलैक्सेशन टाइम इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आपने सडन कुछ देखा इमरजेंसी और आपने ब्रेक लगाया, तो आपका माइंड कितनी जल्दी रिएक्ट करता है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इनर्शिया ऑफ ड्राइव लाइन. ड्राइव लाइन के अंदर जो है क्या है कि इनर्शिया बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वेट है, तो उनको रुकने में टाइम लगेगा ड्राइव लाइन को, तो ये भी इफेक्ट करेगा ब्रेकिंग सिस्टम को. सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द following equation. So let us see. We know that s equal to ut minus half ft square. हमने इसको बचपन से ये इक्वेशन पढ़ते आ रहे हैं, s equal to ut minus half ft square. वन एक इक्वेशन ये हुआ. another equation is v square minus u square equal to minus 2fs. माइनस यहाँ पे हम लोग इसलिए अप्लाई कर रहे हैं ड्यू टू डिसिलरेशन. होल सिस्टम किस पे जा रहा है? ड्यू टू डिसिलरेशन वी आर यूजिंग हियर माइनस. अदरवाइज हम अगर ये एक्सेलरेट होता तो ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन वी विल पुट हियर s इक्वल टू ut प्लस हाफ ft स्क्वायर, बट हियर सिस्टम क्या हो रहा है? डिसिलरेट हो रहा है, दैट्स व्हाई वी विल यूज माइनस हियर. नाउ हियर s इज व्हाट? योर डिस्टेंस, u is initial velocity, v is the final velocity, t duration of application of the brake, and f is the deceleration of the vehicle. And from equation 2, it is our equation 2, we know that whenever we will apply the force, we will apply the brake, जो फाइनल वेलोसिटी होगी दैट विल बी 0. अगर ब्रेक पूरा लग चुका है तो 0 जब हो गया तो ये क्या हो जाएगा? 0 पार्ट माइनस u स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2fs वी विल गेट, और यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली वी विल गेट s इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2fs. इट इज योर स्टॉपिंग डिस्टेंस. Now it is very important topic, brake pad. Every year in the GTU
या तो इस साल पूछेगा, नहीं तो नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछता है। राइट डाउन ए शॉर्ट नोट्स ऑन ब्रेक पैड, इस तरह के क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट इज ब्रेक पैड? It is the phenomena of condition whereas a vehicle is unable to stop moving with the application of the brake. Suppose क्या होता है कि कभी-कभी हम we are applying the brake but vehicles जो है वो रुक नहीं रहा है। So क्या रीजन है इसका वो देखते हैं। तो रीजन इनका सबसे बड़ा रीजन है हीट डिसिपेशन प्रॉपर नहीं होना। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। ब्रेक पैड इज ऑफन द रिजल्ट ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन बिटवीन द शू एंड ड्रम और द ब्रेक पैड और डिस्क रोटर। अगर ड्रम ब्रेक है तो यहाँ पे शू ड्रम ब्रेक पैड होगा, अगर ये डिस्क ब्रेक है तो डिस्क रोटर होगा। अब इसके क्या रीजंस होते हैं? व्हाट आर द रीजन ऑफ ब्रेक पैड? द फर्स्ट रीजन इज excessive temperature in the brake drum. Okay, under the several use brake drum may reach 590 Kelvin temperature. You can't imagine कि 590 Kelvin temperature कितना ज्यादा होता है। So due to this temperature क्या होगा, ब्रेक ड्रम जो है वो एक्सपेंड करेगा, क्योंकि वो क्या है, मटेरियल किस चीज का बना हुआ है, वो एक मेटल है जो कि एक्सपेंड होगा। साथ ही हमारे जो ब्रेक शू है उस पे भी इफेक्ट आएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारी ब्रेकिंग कैपेसिटी विल डिक्रीज, डिक्रीजिंग द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एट हाई टेम्परेचर। वी नो जब टेम्परेचर विल इंक्रीज तो हमारी जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। समटाइम क्या होता है, नंबर ऑफ सेवरल स्टॉप्स, हम बार बार उनको क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं फिर छोड़ते हैं, ब्रेक लगाते हैं छोड़ते हैं। इससे भी क्या होता है, ब्रेक ड्रम और ब्रेक शू क्या हो जाता है, टेम्परेचर वहां का इंक्रीज हो जाता है। समटाइम क्या होता है, होल्डिंग द ब्रेक, हम क्या करते हैं, वी आर अप्लाइंग द ब्रेक, स्लो ब्रेक अप्लाई किए हुए हैं और व्हीकल मूव कर रहा है, तो वहां पर भी प्रॉब्लम होती है। और ये बेसिकली कहां पे होता है, जब हिल ग्रेड, लॉन्ग डाउन हिल ग्रेड, जब लंबी दूरी ग्रेडिंग पे हम चलते हैं नीचे, तो वहां पे क्या होता है, वी आर अप्लाइंग द फ्यू ब्रेक्स, और जिसकी वजह से क्या होता है, अपना ब्रेक शू और ड्रम के बीच में क्या हो जाता है, रेगुलरली टेम्परेचर इंक्रीज होते रहता है। तो इससे क्या होता है, ब्रेक फेड होता है। Sometime in the brake drum there is very less cooling space available, but in the disc brake you will see that there are few holes in the disc. Reason of this hole is what, heat dissipation। और ये heat dissipation होगा तो उनके कैलिपर्स के ऊपर क्या होगा कि उसके जो फ्रिक्शन कैपेसिटी है वो बनी रहेगी, क्योंकि वहां टेम्परेचर ज्यादा राइज नहीं होगा। Therefore chances of a brake fade is more in the drum brake compared to disc brake. Let the drum brake and the disc brake expansion due to the brake temperature is another factor for brake fade. So how to resist this brake fade? No, drum brake must be limit brake shoe are up to 110 डिग्री, 110 डिग्री तक हम क्या करते हैं, ब्रेक शू की आर्क रखते हैं, ताकि अगर वो एक्सपेंड भी हो तो वो मेंटेन कर ले किसको, coefficient of friction को। We know that the coefficient of friction is depending on surface area also। तो 1 डिग्री, 110 डिग्री अगर हम क्या करते हैं, ब्रेक शू को रखते हैं तो कोफिशिएंट ज्यादा होगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, बिकॉज एरिया इंक्रीज हो चुका है। अनदर थिंग, द पावर एब्जॉर्प्शन, इट इज observed that 18,370 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर ऑफ द लाइनिंग। अगर हम इतना रखते हैं तो हमारा क्या होगा, ब्रेक फेड के चांसेस कम होंगे। ओके, द पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्रेक ड्यूरिंग ए स्टॉप कैन बी कैलकुलेटेड दैट द काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय 1000 इनटू टी। अब यहाँ पे टी इज द टाइम, वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय टाइम, और 1000 हमने इसलिए यहाँ पे डिवाइड किया, हम इनको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, किलोवाट में। अगर हम इनको सिर्फ वाट में रखते तो हमें यहाँ पे 1000 लिखने की जरूरत नहीं होती। सो थैंक यू। Today we have learned about the balancing of the brake pad or definition of the brake. Since it is very important topic, so हम इनको 2 या 3 लेक्चर्स में कवर करेंगे और पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, because its weightage is almost 20%. In the next lecture हम फिर से इनकी थ्योरी पढ़ेंगे। In the third lecture or maybe in the fourth lecture we will discuss about the numerical. Almost I will try to cover all the numericals जो भी GTUs में आते हैं। Okay,
थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।